Okay. Good evening, and my name is Ritu Khadayat, and I am the coordinator of DLF Phase 2 Chai Masti Center, Gurgaon. Uh, I give you a warm welcome to today's exciting session, where we have two very special members from the National Media Center, Gurgaon, who are going to talk about and display some rare and unusually creative talent with all of us today. Premaji, now I request you to kindly take this session forward. Thank you. Thank you, Ritu. Thank you so much. Okay. Uh, uh, Rajesh, please, you admit the members, please. Huh? Okay, good evening, friends. Today, I'm really very proud to introduce Amita Bhargav and Renu Saxena. Let's start with Amita Bhargav's Oshibana painting. Amita is immensely gifted and talented. She has acquired the master's degree in fine arts. She wears many hats. She is an artist, a nature lover, social worker, and a grandmother to a loving granddaughter. Now I request Amita to talk on how she started her journey with this art form. Amita, over to you. Unmute yourself and start. All the best. All the best, Amita ji. थैंक यू प्रेमा जी एंड रितु जी। सभी डिग्निटी परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आभार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय एवं प्रिय शीलू जी, अर्चना जी, प्रेमा जी, सुष्मिता जी एंड रितु जी का, जिन्होंने डिग्निटी के इस प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट दिखाने का हमें विश्व अवसर प्रदान किया। Since childhood, I have been creating different type of paintings such as oil colors, acrylic, watercolors, and miniatures, etc. My interest in eco-friendly dried leaves and flowers paintings rose from the waste bouquet and fallen leaves flowers from the at the home. The art pieces are made by using different colored flowers and leaves pressed and dried for use. After framing, the artwork looks like any normal watercolor or oil painting. But when viewed from a certain distance, it looks like it gives a 3D effect. आज मैं आपको एक ऐसी आर्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जो बिना किसी रंगों के और ब्रश की सहायता से बन सकती है। Nature is the best inspiration for creativity. It not only tells stories but also shares materials that you can draw pictures and pictures with not with colors and with flowers, petals, seeds, plants, etc., etc. This art has its own name, Oshibana. ओशिबाना एक जापानीज आर्ट है जिसका आविष्कार 16th सेंचुरी में हुआ था, जो अब वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बना चुकी है। जब हम प्रेस्ड फ्लावर्स और लीव्स और प्लांट्स, जब हम इन एलिमेंट्स के संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी समाप्त होकर पॉजिटिविटी का संचार होता है। ये एक तरह से थेरेपी का काम करती है। जब हम नेचर के एकदम करीब होते हैं, फूल पत्तों को देखकर मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है और डिप्रेशन भी दूर होता है। इस आर्ट को बनाने के में हमारी पेशेंस और कंसंट्रेशन बढ़ती है। एक पेंटिंग बनाने के लिए महीनों पहले से फूल पत्तों को एकत्र करना पड़ता है और उन्हें ड्राई करना पड़ता है। फूल पत्ते, सीड्स आदि का चयन हमें पेंटिंग के आधार पर करना पड़ता है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें कैसे फ्लावर्स को ड्राई करना है और उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहली टेक्निक तो किताबों के बीच में यदि हम फ्लावर्स को दूसरे उस पे मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। राजेश,
Yes, done. Yeah. Amita, you have to mute one this thing, mobile, one camera. सबसे पहली टेक्निक सबसे पहले तो फ्लावर्स को जो हम लोग पहले करते थे कि इसके ऊपर किताब के बीच में रख लीजिए और इसको बंद करके आप इसके ऊपर को प्रेशर डालकर 10-15 दिन के लिए भूल जाइए, ये बाद में सूख जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिक। इसके बाद दूसरी जो टेक्निक है, आवाज आ रही है ना इसमें? हाँ, आ रही है। प्रेमा जी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अमिता, गो ऑन। ओके, दूसरी जो टेक्निक है वो है माइक्रोवेव के अंदर फ्लावर्स को सुखाने का। ये मेरे पास मैंने ये इस तरह से जो किचन के अंदर पेपर टॉवल होता है उसको लेकर उसके बीच में रख के आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए और इसके पर कोई भी जो माइक्रोवेव प्रूफ कोई भी यूटेंसिल है उसको रख दीजिए और इसको 1 मिनट के लिए चला लीजिए। जो थोड़ा सा मोटे पेटल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। ये मैंने रिजल्ट भी इस समय आपके सामने है। ये फ्रेश फ्लावर्स हैं जिनको कि मैंने माइक्रोवेव करा है। तो ये देखिए इनके कलर्स वगैरह मोर और लेस सेम ही रह जाते हैं। ये देखिए ये वाला और ये है। ये सूखने के बाद ये देखिए कलर्स इंटेक हैं और रिजल्ट इसका बहुत जल्दी मिलता है। यदि आपके पास माइक्रोवेव की सुविधा ना हो तो इसी तरीके से रखकर हम इसके ऊपर अपने घर में जो आयरन करते हैं उसको भी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रख के इनको सुखा सकते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप है इस पेंटिंग को बनाने के लिए। अब सेकंड आपको बताती हूँ कि मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो ये फ्लावर्स ही चाहिए होते हैं। दूसरा ये फेवी ग्लू होता है जिससे कि हम चिपकाते हैं फ्लावर्स और पेटल्स को। सेकंड एक ये ट्विजर या इस तरह से पॉइंटेड नाइफ हो, दोनों में से जो भी आपके पास होता है उससे आप, क्योंकि जो बहुत पतले लीव्स होती हैं उनको उठाने के लिए थोड़ी हेल्प मिलती है। अब तीसरा स्टेप, अब मैं आपको एक पेंटिंग बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले फ्लावर्स और पेटल्स जो आपके सूखे हुए हैं उनको कंपोजिशन बनाने के लिए हमें उन्हें अपने माइंड से सेट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने ये सेट कर रखा है और इसके बाद ये थोड़ा सा मैंने पहले चिपका दिए हैं 2-3। अब ये आपके सामने मैं चिपकाती हूँ कि कैसे इसको करना है। ये सुखा रखे हैं पत्ते, मैंने फर्न के पत्ते हैं। इसके पीछे हम इसे गम को लगाएंगे। फिर उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए इसको बुक से दबा दिया जाता है। अब मैं दूसरी तरफ का लगा रही हूँ। इसको लीव को थोड़ा ना शेप देनी पड़ती है, घुमा के इसको चिपकाना है हमें।
जय हिंद। थोड़ा थोड़ा भी चिपका है। इसके सेंटर में ही इसके जब तक ये सूखता है मैं इसकी ये लगाती हूँ। ये कंप्लीट इसको दबा के रख दिया। जब तक ये थोड़ा सूखता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सूखने में। इतने में आपको कि इन फूल पत्तों से और क्या क्या बनाया जा सकता है मैं आपको कुछ अपनी क्रिएशन दिखाती हूँ। बनने के बाद ये देखिए रैबिट है जो थोड़े से पत्तों से और बहुत इजीली बन सकता है। आप लोग अपने आप आराम से इसको बना सकते हैं। ये सब सूखे हुए नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सूखे हुए पत्ते हैं। और ओके, ये बनी हुई काफी दिन की है मेरी पेंटिंग। बिकॉज दे आर ऑल सो नाइस एंड ग्रीन। यस, बिकॉज इनको यदि हम माइक्रोवेव में रखते हैं तो थोड़ा सा कलर्स इंटैक्ट रहते हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं है, किताबों में भी मॉइस्चर यदि आप उसको बार बार नहीं खोलेंगे तो कलर्स इंटैक्ट रहते हैं। थोड़े दिन रख के भूल जाइए उनको, है ना। Right. It's really good. Nice it is. मगर मैं भी सुखाती थी, मगर मेरे तो कलर भी ब्राउन हो जाते हैं। सॉरी। ये देखिए वाटर लिली के साथ है, बटरफ्लाई बनाई है। और इसके ऊपर जो अल्फाबेट्स भी मैंने पत्तों से लिखे हैं। वंडरफुल। बॉटल ब्रश होता है ना, बॉटल ब्रश के छोटे छोटे पत्ते हैं जिनसे मैंने कोशिश करी है बनाने की, लिखने का अल्फाबेट्स। बहुत सुंदर अमिता, बहुत ही प्यारे, पत्तियां तो बहुत ही प्यारी है। थैंक यू मधु। चलो उठा लाऊंगी, मैं पड़ोस में रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज अनदर कंपोजिशन विद डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट कलर्स। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। मजा आ गया देख के। मजा आ गया रियली। वाह, ब्यूटीफुल। Beautiful. इन्हीं के लिए बहुत पहले मेहनत करनी पड़ती है, कलर्स रखना। तो हार्मनी। अमिता, ये फ्लावर्स का कलर यही रहेगा हमेशा? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। कलर विल नॉट चेंज? नो। ओके, अमिता ने हमारे से कराए हैं और इंटेक्ट रहते कलर। वेरी नाइस। हाँ, एक बार क्लास लेते। हाँ,
हम लोग बचपन में किया करते थे ये काम, जब छोटे थे ना, छोटे बच्चे छोटे थे, किताबों में रखते थे। हाँ। बिल्कुल। ये मैंने डिफरेंट कार्टेज आर्ट पेपर लिया है, कार्टेज वाला कलर्ड पेपर, उसके ऊपर ये सारे रोजेज हैं। क्या पेपर का नाम क्या बताया अमिता? कार्टेज पेपर है। अच्छा, कलर्ड लिया है, हैंडमेड पेपर होता है। ओके। मैं तो सारे कार्ड्स बनाती थी इसी फूलों से। क्या बात है, बहुत सुंदर। Good, good. नाइस। ओह लवली, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दो आकृतियां लग रही हैं, दो दो बच्चियां खेल रही हैं जैसे। हाँ। बिल्कुल। बहुत ही प्यारा। अमिता जी, एक सवाल था। जी हाँ, पूछिए। आप क्या पहले कागज पे ड्राइंग करती हैं? आपको कैसे पता रहता है कि पेस्ट कहाँ करना है फ्लावर को? नहीं, इसमें ये अपना, क्योंकि एक्चुअली मैं आर्टिस्ट हूँ तो अपने हिसाब से मैं कंपोजिशन बना लेती हूँ। जब फ्लावर्स और हम जब आइडिया आ जाता है हमें। वैसे सेफर साइड के लिए स्टार्टिंग में हम कर भी सकते हैं ना अमिता ये? हाँ, बिल्कुल। यदि आप एक Okay. शेप बना के ना कुछ भी उसके ऊपर भी चिपका सकते हैं, ऐसा नहीं है। One needs to be a little imaginative. तभी Yes. आइडियाज आएंगे। हाँ, लेकिन शुरुआत ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक शेप बना के हम उसके बीच में चिपका सकते हैं। थैंक यू अमिता जी। मॉडर्न आर्ट बना सकते हैं। तो आपने अमिता इनको फ्रेम कराया हुआ है? अमिता, क्या चीज? ये फ्रेम कराया हुआ है सब आपने? सब मैंने फ्रेम से हाँ, नहीं सब फ्रेम करना करवाया ना, अदरवाइज कैसे होगा। अच्छा, ओके। ओहो, शुतुरमुर्ग, This is so nice, lovely. Yes. क्यूट। This is beautiful. Oh my God. इसका स्टमक तो बहुत ही फ्लावरी, बहुत ही क्यूट लग रहा है। हम लोग जो घर में बुके आते हैं वो फ्लावर्स फेंक देते हैं, उन सबको यूज करिए। दो दिन उनका वैसे मजा लीजिए, उसके बाद उनको सुखा लीजिए। सो अमिता जी, एक टिपिकल काम के लिए, ऐसे क्रिएटिव काम के लिए, एक पर्टिकुलर पेंटिंग के लिए आपको कितना समय लगता है? मतलब डिपेंड करता है। कई बार तो, क्योंकि अब जैसे यहाँ पर ठंड भी ज्यादा है तो इन्हें सुखाने में भी टाइम लगता है, लीव्स को, और चिपकाने में थोड़ा टाइम ले लेती हैं। अदरवाइज डिपेंड करता है कि हमें कितनी बड़ी बनानी है। छोटी पेंटिंग आपकी 2 घंटे में भी तैयार हो सकती है, यदि आपके फ्लावर्स वगैरह सब तैयार हैं। Depends on, yes. एंड सिंगल All the लीव्स, material. यदि आपको ये देखिए, Maple leaf. मैपल लीव, Maple. That looks very pretty. सिंपल आप इसको बुक मार्क भी यूज कर सकते हैं। ये आपने पेंट किया अमिता? नहीं, ये हाइबिस्कस के फ्लावर्स की पेटल्स हैं। वाओ एंड वाओ, So nice. बहुत You can't सुंदर even tell. ना। मुझे तो लगा आपने इनको क्योंकि- कलर किया ऊपर से। नहीं, क्योंकि आज तो फ्लावर्स और लीव्स का ही है ना, पेंट करके नहीं दिखाना है। बिल्कुल। दिस इज अनदर यूज ऑफ कलर। This is really lovely. दिस इज फोटो फ्रेम, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको। Orchid flowers है ना? Beautiful. पिटूनिया फ्लावर्स हैं। ऑर्किड ऑर्किड Orchid. ऑर्किड, दिस इज ऑर्किड। यस, ये भी कोई बुके ही था, उसमें से मेरे जब सूखने लग गए तो मैंने इनको ऐसे इस्तेमाल कर लिया। Very nice. अभी तो मैं इसको देखती हूँ, सूख गया होगा। Wow.
वो नेक पोर्शन क्या यूज करके बनाया अमिता? नेक एंड द लेग्स? जब आएगा तो मेरी बात करवा देना। बैक्स पे लेग्स टांगे टांगे हाँ, जो लेग्स पे मैंने एक्चुअली जो भी बाहर प्लांट्स लगे हुए थे, जब उनकी सूख के पत्तियां झड़ गई तो उनकी डंडियों को यूज करा। अच्छा अच्छा, बीच की। हाँ, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, so nice, yeah. वेरी ब्यूटीफुल अमिता, बहुत ब्यूटीफुल। अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। अमिता 1 मिनट इसको पकड़ोगे? आई कैन आई क्लिक अ पिक्चर? हाँ, ऐसे ही रहने दो। ओके, इसको या हाँ, थैंक यू। आंखें चमक गई अमिता। हाँ, बस बस, ओके। हाँ। अब आप रख दो। ले लिया मैंने, ले लिया। अमिता हो गया। Which glue is the best to stick the leaves? मैं तो ये फेविगम है, वैसे और भी आते हैं। फेविगम, फेविकॉल Yes, के भी आते हैं। यस, it's easily available. दिस इज नाइस वन। मतलब बहुत अच्छे से stick हो जाते हैं। कल मुझे Now you can unmute yourself and ask the question. This is a transparent another event. हाँ. Yeah. Please can you show me the rabbit earlier one, rabbit one, first one, for first two pictures. First one. Yes. First one. I can show you. Yeah. बहुत लोग देख रहे हैं ये देखिए। So cute, so अलग-अलग प्लेटफॉर्म बैठे हैं सब ये। Very cute. Thank you, ma'am. बहुत ही बढ़िया। पटना सबसे बड़ा। Very nice. Yes. How long can you keep the dried leaves before you put them in a frame or something? सब लेडीज हैं, सब पढ़ी ड्राई हुई करके हैं। कितने दिन रख सकते हैं? ड्राई करके कितने दिन रख सकते हैं? हाँ, तुरंत नहीं यूज किया तो उसको मैंने भी एक बॉक्स बना रखा है, मैं उसमें ड्राई कर करके रखती रहती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन बस थोड़ा सा केयरफुल होके रखना पड़ता है कि वो ब्रेक ना हो जाए। या जैसे आपने एक लेयर लगा ली, उसके ऊपर एक फिर से कोई टिश्यू लगा दिया, उसके ऊपर दूसरी लेयर लगा लीजिए, तो वो काफी दिन तक रहते हैं ऐसे। यदि मैंने एक दिखाती हूँ आपको, एक बॉक्स बना रखा है। ऐसे बॉक्स है, ये लीव्स ये सूखे हुए हैं, इसके नीचे और हैं, ये देखिए सब, ये देखिए ऐसे मैं रखती रहती हूँ अपना सुखा के ना। या ओके, थैंक यू। ये जो क्रिसैंथेमम है, ये सुखा रखी है मैंने। फिर ये झड़ते नहीं? नहीं झड़ेंगे नहीं ना, ये देखिए आपके सामने। इसके बाद नहीं, आपने पेस्ट कर दिया इसको, इस पे पेंट करके लगा दिया? नहीं, ये देखिए फर्न के पत्ते जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ऐसे रख लेती हूँ मैं इनको सुखा के। हाँ, फिर उसको आपने पेंट कर दिया? नहीं, पेंट नहीं करना। नहीं करा है, पेंट तो करा ही नहीं। ठीक है, बढ़िया। ठंड तो हो रही है, आज तो धूप भी काफी। फेविकोल से चिपका दिया? They are used as they are, no painting over them, natural. फेविकॉल से चिपका के और बस फिर नहीं निकलेंगी। अमिता, Thank you so much, lovely. अमिता जी, देयर इज वन क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स जहाँ पे पूछा है कि सारी पत्तियां क्या आपने माइक्रो ओवन में सुखाई हैं और यू हैव ड्राइड देम नेचुरली आल्सो? हाँ, कुछ नेचुरली भी सुखाई है मैंने, कुछ माइक्रोवेव में करी है। ओके ओके, हाँ जी, बेटर ऑप्शन। तो एक्चुअली क्या होता है, जो थोड़े से जिनमें थोड़े थिक होते हैं ना फ्लावर्स, वो माइक्रोवेव में कलर्स उनके इंटैक्ट नहीं रह पाते हैं, उनको टाइम भी बहुत लगता है। तो वो है, जैसे मैंने रोजेस करे थे ना, रोजेस मैंने बुक्स में ही रखे हैं, न्यूज़पेपर के बीच में लगा के रख दिए, क्योंकि रोजेस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चर, लेयर्स काफी होती हैं, तो वो नहीं हो पाते हैं। Okay, thank you. Can I show one frame? Can I show one frame I bought from Sri Lanka? Excuse me, may I ask just one question? Wow, Hasina ji looks very nice. Thank you. I just wanted to show. Can you all see it properly? Wow, this is very beautiful.
बहुत सुंदर. Hello, can Thank I you. ask Thank one you. question? Yes, please. Yeah, she said some of the flowers, she dried them naturally. That is between sheets of paper in the book, which we used to traditionally do. Generally, when you dry it that way, it loses its color completely and you get something like a light brown, brownish tinge. So I like this idea of microwave. Yeah, Can we this not, is the best idea. Yeah. even the roses, probably are you suggesting you keep it for a short while and allow it to lose some of its moisture and then put it into a micro? Yeah, that's a very good idea. Huh? Good. I You think can so. do it. Yeah. But I have dried in the books only. The roses are dried in a book? Yeah. These are the roses. Yeah. This is red desi gulab roses, desi roses, and these are light yellow. Off-white colors. Yeah. These are off-white colors. आप पुस्तक में डाल के सुखाइए ये सबको. ये जो है आप पुस्तक में डाल के सुखा दिए या अवन में डाल के सुखाइए, वही मुझे मालूम होने का. नहीं, ये तो बुक्स के अंदर ही अच्छे सूखेंगे. माइक्रो में नहीं सूखेंगे अच्छे से. ओके, फिर वो कलर न जाने के लिए आपने कुछ स्पेशल मेथड यूज किया? नथिंग, ये तो एज इट इज ही है. बुक्स के अंदर भी एज इट इज रहे हैं रोजेस. अच्छा, एज इट इज. यस, प्रेशर में बस रख दीजिए उनको. हाँ, तो मैं भी ऐसे करती हूँ. मैं तो बहुत ऐसे करती हूँ, बट आई पुट इट one book on top of another, so you get a big amount of pressure, but then the color goes. I don't know how it is. Okay, I will try without putting too much pressure, and let me see if I can get it. No. You've given me cause to think and experiment. Thank you. Yes. Thank you, Revati ji. Thank you so much. Kashi ji, you want to ask something? You've raised your hand. Please unmute yourself. Yes, I want to tell Amita that real good demo she gave, and the narration is also very good, and I like that very much. Thank you, Kashi ji. Thank you, Kashi ji. Question to Amita is, does she train the students on this art form? Students, youngsters, do you give a training to them how to do this? No. I think you have your YouTube channel. YouTube channel would help, And the second question which I want to ask you, have you thought of holding an exhibition of your creations? That will be. Yeah, I had exhibition of my oil paintings, watercolor paintings. Okay. Yeah. These are, yeah. I had exhibit these paintings. Thank you very much. I wish you all the best. अमिता, मंगल सर ने एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे हम कपड़े धूप में सुखाते हैं, वैसे क्या हम फूलों को धूप में सुखा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. खराब हो जाएंगे. एकदम सूख के और टूट जाएंगे. वो तो खराब हो जाएंगे. वो जड़ जाएंगे, सारे जड़ जाएंगे. हाँ, okay. सुखाएंगे तो जड़ जाएंगे सारे. Okay, Mangal ji, it's not that easy actually to dry flowers. So I would like to ask something. Yes, please. Yes. मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया. अवन में इनको कैसे ड्राई करते हैं? ओवन में करने के लिए ये जो हमारे किचन टॉवल होते हैं पेपर वाले, इनके बीच में आप इनको दो के बीच में ऐसे रखना है आपको. ओके. और उसके बाद इसके ऊपर दूसरा ऐसे रखा, एंड देन कोई भी जो आपके पास माइक्रोवेव प्रूफ कोई भी ढक्कन है, कोई कप है, वो रख दीजिए इसके ऊपर, जिससे ये उड़े ना. और इसके कलर और फिर आप 1 मिनट के लिए चला दीजिए. और डिपेंड करता है, कई बार जो इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा,
मैं 30 सेकंड्स के लिए चला के एक बार देखती जरूर हूँ कि कैसा हो रहा है। यदि मुझे लगता है कि सफिशिएंट है तो नहीं चलाती, और यदि आपको जरूरत लगती है तो 30 मिनट्स और चला लीजिए। Thank you so much. Your work is really amazing. इतना बढ़िया Appreciable, very. Amrita, may I? I don't know if I Josephine, you want to ask something? Yeah. Yes. Does the what power of a microwave matter like 800 degrees or 900 degrees or anything? Not at all. Not at all. हाई में करते हैं ना माइक्रोवेव? हाई में? नॉट हाईवे पे नहीं, मीडियम जो नॉर्मल है उसी में। नॉर्मल तो हम लोग जनरली 800 पर कुकिंग का कुछ वार्म करते हैं। यस तो उसमें 30 सेकंड्स करिए एंड देन 1 मिनट। यदि आपको लगता है 30 सेकंड्स इनफ फॉर पेटल्स, अदरवाइज यदि नहीं सूखा हुआ आपको लग रहा है तो 30 मिनट्स अनदर चला दीजिए उसको। 30 सेकंड्स 30 seconds is enough. Yes. Sometimes enough. थोड़ा सा यदि थोड़ा सा मोटा फ्लावर है, थिकनेस है तो थोड़ा सा ज्यादा चला दीजिए, वो आपको देखना पड़ेगा। Amrita, may I ask you a question? Amita, Mr. Josephine is asking one question. Yeah, I wanted to know, between doing the art and framing it, what is the gap we will need to keep? Between? We finished the pattern. Hello. Now I need to frame it. So, what is the time gap I'll have to wait? 2-3 days. I'll have to keep it for drying for about a couple of days. Yes. And then stick on the paper. 2-3 days wait and then frame it. What is the best way of framing it? What is the best way? Yeah, I mean, a glass on top or on top is good. These are all glass. So with the glass, it will get well protected, correct? Yeah. No, it will stay as they are. क्योंकि इससे मॉइस्चर अंदर नहीं जाएगा ना, सब भी अच्छी तरह से पैक हो जाता है। अदरवाइज मॉइस्चर से खराब हो जाएगा। Thank you. Colonel Gopal Verma ji is asking something. You can unmute yourself, please. ऐसे भी तो हेलो ऐसे भी कर सकते हैं अमिता जी कि फैन चला दे और पेपर बिछा के उसके ऊपर जो पतले फ्लावर होते हैं उनको दबा के रख देते, जैसे धनिया पुदीना ये सब हमारी वो काम करने वाली सुखाती है, तो उसमें कलर भी नहीं जाता और ठीक है। उनकी शेप सारी खत्म हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा फ्लावर है जो आपने सुखाया। वो धनिया। अमिता जी, Colonel Verma, you asked a question, please. Amita ji, namaskar. I am Colonel Gopal Verma, volunteer with Dignity Foundation. My compliments to you. पहले तो बहुत बढ़िया आपकी पेंटिंग्स मुझे लगी, very original. Thank you. से ऑर्गेनिक पेंटिंग्स आपकी, अभी तक तो ऑर्गेनिक फूड वगैरह सब यही सुनते थे, ये शायद ऑर्गेनिक पेंटिंग्स इसको नाम दे सकते। बिल्कुल, आपने नया नाम दे दिया। हम इको फ्रेंडली बोल रहे थे। इको फ्रेंडली। थैंक यू कर्नल साहब। थैंक यू कर्नल जी। अमिता जुबान पर एक हमारा आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट करके ग्रुप भी है, काफी अच्छे उसमें सब वेरी नोन आर्टिस्ट आर देयर, तो आप उसको प्लीज ज्वाइन करिए मेरे ग्रुप को, और उससे मतलब आप अपनी आर्ट डिस्कस कर सकती हैं, दूसरे आर्टिस्ट जो हैं उनसे आप थोड़ा अपनी आर्ट के बारे में भी थोड़ा सा नेटवर्किंग भी हो जाता है उससे। थैंक यू सो मच। और सेकंड माय मेन क्वेश्चन वाज, ये सेल के लिए भी हैं आपकी पेंटिंग्स क्या? अभी तक तो सोचा नहीं है, लेकिन हाँ यदि ये आर्ट क्यूरेटर यही करते हैं। बिल्कुल। खैर एनीवे, जब आप जुड़ेंगी तो मे बी विल डिस्कस 1-to-1. I would definitely like to people to buy such beautiful work. Thank you so much. Thank you.
हेलो हेलो अमिता जी। Thank you so much. हाँ जी। मैं कलकत्ते से हूँ, मेरा नाम अनुरूपा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये फ्रेम जो आपने लगाया है, जो ग्लास लगाया है, उसके बदले में हम जो शेयर वो प्लास्टिक सा मिलता है वैसे लगा सकते हैं? एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी मॉइस्चर चला गया इसके अंदर तो एक तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डर होता है, और मॉइस्चर तो जाएगा, इसकी वजह से इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं। नहीं, वैसे मैंने काफी पेंटिंग्स उनसे किया है, जैसे झांका वगैरह किया है प्लास्टिक से, तो अच्छा ही था। हाँ तो ठीक है, क्योंकि मैंने यूज नहीं करा इसलिए मुझे थोड़ा नहीं मालूम इस बारे में। ओके ओके, अच्छा अच्छा, आपने करा है तो बिल्कुल करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। Ritu, now we have to move. I need move one on. question. I want to Yeah. ask a question. So many questions we have. Just one. Yes, yes. Okay, we'll take the last question. Yes. Amita ji, thank you very much. I'm Joya from Delhi. Thank you very much for showing the technique and your beautiful displays. I wondered if you had a book showing how the Japanese use their, because they don't have so many flowers. How do they do? If you have a book, we have so many flowers, tropical and otherwise, but they have all these ferns and leaves and things. They have morning glory. Zen में Zen कहा था ना, तो morning glory होता है। वो कैसे Zen करते हैं? कोई किताब है? Zen gardening we will show you right now. This is that is the second event. Okay. Okay. This is Amita ji, I believe this is the the question paper. relates to recommendation of a book. Can you recommend a book on the same theme subject? Ushibana पे क्या आपने कोई बुक रेफर करी थी while learning the art? मैंने कोई बुक नहीं रेफर करी है, ये तो मेरा अपना शौक है, तो मैंने देखा था कि दिस इज ओशिबाना आर्ट, बट मैंने कोई बुक नहीं करी है। जी, थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सहजता से जवाब दिए सारे। Very nice, very nice. Now let's thank you so much, Amita, and I'm very proud that you are from my center, and I am very blessed that I am with you people. I have got such a lovely friends with me. So thank you so much, Amita. Okay, the next member. Before you close, can you spell the Japanese name, please? Oshibana. Oshibana. Okay. Can you just put it in the chat box? So yeah, Ritu, can you do that? Ritu, yes, can it's you already do? Yeah. Yes, it's already done by Archana. Revati ji, please have a look at the chat box. You'll be able to see it. Thank you so much. Okay, thank you, thank you. Sorry, Ritu, can you mute everyone, please? Yes, I am doing. Yeah. Wait, just a second, huh? Yes. Premaji, please unmute your. Premaji, please unmute yourself. Yeah, I've done. Yeah. Okay, the next member from National Media Center, Chai Masti Center, is immensely gifted and talented. She is our Renu Saxena, who will be talking about her experience with Zen gardening. Mrs. Renu Saxena has worked as an academic supervisor and has served as a HOD of biology department at Delhi Public School, RK Puram, New Delhi for 27 years. Let us hear from Renu ji what she has to share about her interest before she starts her talent. Renu ji, now it's up to you, on you. Thank you so much, Prema. Namaskar. Good evening, all my dear friends. I'm extremely thrilled today to be a part of Dignity Foundation and the Chai Masti Club. I'm extremely thankful to Shiluji for her vision about Dignity Foundation, the love, care which she has taken for the senior citizens is going a long way. I think we are indebted to her and her team of people
who kept us going even during these difficult COVID times. I'm also extremely thankful to our chapter head, Archana ji, and our coordinators, Prema, Ritu, and Shushmita, for always motivating us to participate and come forward in our talent. It is really overwhelming when senior citizens are taken so much care of. Otherwise, after retirement, we feel that we are of no use. But I feel that Chai Masti Club and Dignity Foundation has really made us to come out with our talents. During these COVID times, I really got an opportunity to learn so many new things on Zoom. And that kept me really going. It made me a student to learn so many things. Though gardening was my passion and my subject biology made me come more closer to nature, this gift came to me from my mother. She is very fond of gardening. So biology and my mother's gift as gardening came forward. I love gardening. And the new techniques which I've learned during these times, one of them is Zen gardening. Zen gardening is a Japanese technique again. Amita has just now mentioned about one of the techniques to come close to nature. I'm also talking about Zen gardening, which brings us close to nature and is a meditative technique. This technique was developed, I think, around 13th century, and it became a part of the Japanese home because Japanese, just like Hindus, always want to remain close to nature, worship nature. And that is what keeps us, more realistic. It gives us a lot of enthusiasm. And as I said, it is also meditative. About health, Prema has already mentioned. I'm Renu Saxena, and of course, a nature lover. Other things Prema has already mentioned. I need not repeat it again. Today, I'm just trying to show you some of the Zen gardening techniques. Zen gardening can be done in small trays or plates. You can keep it on your office table, study table, at home in a small corner, or you can even do it outside in a garden or even in big gardens. Zen gardening basically is a very meditative technique. This tray which has been shown here is a dry arrangement. And on the left, this is a Zen garden, which is more natural. So as I said, Zen gardening is a technique to come close to nature. Yes, definitely there are some principles to make these Zen gardens. According to Cato, one of the masters of Zen gardening, he said that these are meditative trays which actually show our own body. So we are correlating our own body with nature. Now, what are the basic principles for making these Zen trays? The first important thing is that they have to be simple, aesthetic, beautiful. Second important thing is we basically use three important things in this, and that is number one, gravel or sand. Number two, stones. There are big stones, small stones, and some pebbles also. These stones represent the backbone, which gives you support. Third important thing is plants. So three important things which are there. Number one, I said, is gravel, which represents water. Number two, I said, is stones, which represent your backbone. And number three are the plants. Now imagine your own body, which has got about 90% of water. So when we use gravel, we are representing the water in our body. The big stones which we are going to use here in this tray, you can see the big stones. These big stones indicate the backbone and the bones inside your body, which is meant for support, gives us more strength. The stony portion represents the hard portions in our body. And the gravel which is around shows the watery portion, which, as I said, is about 90%. In the gravel, we have made some waves.
These waves are very indicative of the wave-like motion inside our body. You all know that the heartbeats come in form of waves. The brain waves also come in form of waves. Sound waves are there. Everything which is flowing inside our body is in form of waves. So imagine when you get disturbed, when you get angry, your waves become more up and down. So to bring that calmness inside your body, we sit with these meditative trays, and these waves are being made so that you calm yourself. So these meditative trays are meant for peace and calmness. Next important thing is their arrangement. On one side, you have to put a large stone, single one, which is the backbone, and basically other stones which are made in an asymmetrical triangular manner. Another important thing is we have to use these stones in an odd number. It could be 3, 5, or 7. And as you can see, they have been placed in a triangular fashion. So you can do these kind of techniques which are technical. These also tell us an important thing, that we should use natural material in this because we have to be close to nature. So try to pick up stones from nature itself. You can even put small pebbles for decoration all around. And for purification, we need plants. Again, we have put these plants, again in numbers of 3, 5, or 7. When you have to water these plants, first of all, use these semi-arid plants, which don't need much water. When you want to water these plants, remove them from the tray, just give a little sprinkle of water and put them back. You may not water them regularly. You just need to water them, say, at least once a week, because they are all semi-arid plants. They don't need much water. To add to this, there are some important things. I have placed a Buddha. You can see a Buddha indicates peace. And always the sitting Buddha, which is also making a triangular posture, is very important for energy flow. This is the meditative pose of Buddha. Another important thing is these stones, which are normally kept one on top of the other. This indicates balance. You must have seen in gardens sometimes they use stones one on top of other. This is meant for balancing your body. You can go on changing the shapes as per your requirement. Then there are some bridges. Bridges indicate connectivity with nature, connectivity with people. And as I said, these need a boundary all around. So you can use a wooden tray or a ceramic tray for making this. This can be kept inside, even on office tables or study tables. Now I come to another tray of mine, which is the more natural arrangement. You can use more plants, more water in it. This is slightly more decorative. This you can use as a decorative piece inside your houses, or even outside in the garden, or even the bigger gardens these days have these kind of arrangements. The basic principle is more or less the same, but its method of making is slightly different, which I'll just demonstrate it. You can see again, I have used gravel. These stones are there. Buddha statues there. Again, I have used about 5 to 7 plants. Now, there's another thing which we have added. These stones which are there indicate the journey of life. So you have to make a pathway in front here, so that shows life is a continuous process in form of a pathway. I will now demonstrate the method how to make these trays. Yeah, right here. For the dry arrangement, I have got a tray. The tray should always have a boundary. Inside this, the first important thing I'm going to use is sand. You can take the sand and put it at the base. Completely fill it up, but very little amount, just to give support to the gravel.
On this, now this is gravel, which is being commonly used in household construction and all, reta, what we call it. So you can take this and put it all around. When we are doing this, actually your mind becomes absolutely calm, quiet, and your body becomes more relaxed. So while making it also, it's a very relaxing feeling where we are close to nature and your mind doesn't get agitated. Can we use sand from the seashore? It is better to use sand or gravel. Okay, because gravel is not easily available for me. Yeah, so you can use sand also. Okay, thank you. Sand or gravel. Now these are the stones. Like I can put one big stone here. And as I said, in a triangle, so you can put one here, to make it more balancing. But the number has to be 3, 5, or 7. So 3, 4, 5, I put about 5 here. Then we can add some stones. As I said, it is better to have only natural material in this. You don't have to have number for these small stones? No, the smaller ones, there is no number. Okay. But for the bigger ones, as I said, 3, 5, or 7. Any odd numbers. Of course, if it's a bigger area, the number can go accordingly. If the tray is also big, you can increase the number. Now these plants which I'm putting, now this one is called as Sansevieria. This again needs very little water, Sansevieria plant. This one which I'm putting is a succulent. Succulent also doesn't need much water. This is again a semi-cactus kind of a variety. Place it here. I'm picking up the Buddha from here. Wow, very nice. You can put Buddha here. Yes. बहुत बढ़िया. And very these nice. lights which are there, हमारे यहाँ भी you all know कि दिए जलाते हैं भगवान के आगे for meditation. So here also it's like a diya, which is a source of energy. Ati sundar. And then as I said, you can make waves in this. These are very calming, peaceful. That is why they're called as meditative trees. I don't have a bridge. So I'm picking up the bridge from here. You can put a bridge here. So more or less like this. बहुत सुंदर. Thank you. Very good. बहुत बढ़िया. मजा आ गया. वाओ. ट्रे में आपने क्या सुंदरता भर दी. 20 years में ना. बहुत सुंदर. पहले एक सिंपल ट्रे थी, अब क्या बन गया. वाओ. ब्यूटीफुल रेणु जी, ब्यूटीफुल. बहुत कमाल, The कमाल. I'm making. अभी आ रहे हैं रेणु. This is the ceramic one. The earlier one. ये तो मुझे चाहिए. ये मुझे चाहिए. ये मुझे चाहिए. ले जाओ. This one has 2 holes here. Okay. This is a ceramic tray. That was a wooden one. So first of all, we have to close these holes with the help of these broken clay pieces, as we normally do it in gardening. Then on top of it, we have to add some broken bricks.
are brick pieces which are broken. This is for keeping the plant cool and to increase the porosity. Sure. We fill the base here. We also add some carbon particles, carbon pieces to it. This is like an antiseptic condition because this keeps the insects away and the fungus and all away. क्या कोयला? कोयला? Yeah. Okay. So we add some कोयला and थोड़ा सा brick का pieces और उसको हमने base में लगा लिया. Then on top of it, we again add mixture of soil. Okay. This is the manure. And one more thing which we are going to add in this is called as coco peat. Coco peat, manure, and soil. All three things to be added because in this, the plants need a little thing to grow also. So we have made a mixture of all these three and kept it here. We add some more of manure and sand. Soil, sorry. Where do we get coco peat in Delhi? New Delhi, South Delhi? Any shop which deals with garden material. Amazon, of course, is available. Everything is available on Amazon. But all these garden shops also have. It's like a brick which I'll show you that. Yeah, I know. It's lovely. It's very good. I have used it. You could try at your local nursery as well. Yeah. That is very true. And on top of this, this is another variety of gravel which I'm adding. Just see that there are no bigger pieces of sand. They all need to be quite uniform. What is the manure you used? Any manure, it could be your vermicompost or simple manure which you get, which is a mixture of your garden and the same manure, which is a mixture basically of your vegetables also you can use. Any manure can go in this. But of course, avoid using the cow dung one because that causes insects to come. You can again add some gravel. मतलब आप रेनू जी लेयर्स लगा रही हैं सारी सॉइल्स की है ना क्योंकि हमारी धरती माता के अंदर भी सब लेयर्स ही है ना अच्छा see when you make it like a nature's this thing it is representing the same thing which is there in nature. Okay. बहुत सुंदर. Okay, and once again, this has been made. You again put those stones and the same number. 358, 359. 357. 357, sorry. मैं ज़्यादा भाग रही हूँ, ज़्यादा तेज भाग रही हूँ. Again, these plants I'm going to put. It's going to call plant. Now, in this case, we are going to put the plants directly. Maybe I don't have the time to put it because that will take a little time. I'm just putting it like this only. But you can take these plants. Now, this plant I'm putting is a jade plant. This is also very important because this is said to be a money giver. Wow. This is the jade plant, which is said to be giving money also. Renuji, is that a bonsai? This one? Yep. No, this is not a bonsai, but yes, a small plant. Okay, thank you. Again, a succulent, which are third small, it becomes a bonsai. This is a succulent. Okay. This is a jade plant. This is Sansevieria. This is also a succulent. इनको पानी कम सब चाहिए होता है ना? इनको पानी बहुत कम चाहिए
और एक बॉटल में पानी लेके नॉर्मली हम लोग उससे पानी डालते हैं. Never put direct water. Take a sprayer, small bottle, which is going to spray the water in it, and you can just water it just once a week only. So this you can make it ornamental. आपका जैसा शौक है, whatever interest you have. But plant selection becomes important because ज़्यादा पानी वाले को नहीं लगा सकते इसमें. बड़ी वाली. Now to make the pathway. Beautiful. इसके अंदर आप कोई सा भी ब्रिक कलर का स्टोन लगा सकते हैं जो टाइल्स वगैरह की होती हैं. Renuji, a slightly unrelated question, but is there a particular direction in the house in which you need to put it? No. There is no specific direction here, except that the stones have to be in a slightly asymmetrical triangular manner. And the numbers have to be there. What I meant was from the feng shui perspective, do we place them somewhere like, let's say, facing the east, or is there any particular direction that you recommend? I am not aware of it, and I'm sorry. Maybe I am not aware of it because from where I learned, they didn't specify this. So I'm not very sure of it. Okay, it just occurred to me, so I asked you, but I'm sure we can all Google it. Maybe I'm not sure of it. As I said, I myself am a student in this. Just learned it about a few months back only. And we are happy to learn with you. I don't know. I'm myself a student, as I said. Maybe if I go into the details of these learnings, maybe there's something specific, which I am not aware of. छोटे वाले stones आपने लगाए रेनू जी, कितने लगाए छोटे वाले stones? नहीं, छोटे वालों का कोई नंबर नहीं है. Okay. One large, one large one. Renu, hello Renu, where did you learn all these? कहाँ से सीखा आपने ये? I have joined a club, a garden club. Garden club. अच्छा. Okay. This is the Buddha statue which you can put here. And of course for lights and all, you can put a light on. I have joined a garden club, and in the garden club this was taught. Okay. So as I said, I कितना टाइम लगा आपको? हाँ जी. कितना टाइम लगा सीखने में आपको? नहीं, this was just a one day class. Just a one day class for 2 hours. So जैसे हमने सीख लिया है अब, जैसे हमने सीख लिया है. मैंने कहा और भी उन्होंने वो मॉडल सिखाए होंगे ना. हमारे पास natural. And they move by natural instinct. There is nothing, as I said, a few principles are there. And according to a few masters, they say in Zen, less is more. So you don't have to overcluster it. Yeah. In Zen, they believe if it is giving you a peaceful environment, it has to be kept in a very neat manner, and less number is always more significant according to them. So these dry ones are more meditative. These becomes more decorative. And if you don't want to make them with Buddha and the basic principles, you can make these also. These are simple tray gardens which I have made. We do not follow the same principles of Zen. So here the number can be variable, the arrangement can be variable. They are very congested. ये थोड़ा congested Yeah, है. that's what I'm saying. Depending on if you want to follow the Zen principle, it has to be less in number. Yeah. These are very all these things have a placement place. But here in these simple garden trays, there is no specific thing. This you can just do it on your decorative purposes. रेनू जी, क्वेश्चन जो लास्ट वाला आपने बनाया ओवल शेप वाला, उसमें जो डिफरेंट टाइप की सॉइल डाली है आपने, उसका लेवल कितना होना चाहिए इन द ट्रे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. कितना ऊंचा? ऐसा कुछ नहीं. That depends. इसको थोड़ा सा, आप मेरे पास थोड़ी कम थी gravel, थोड़ा सा इसको ऊंचा करते so that it could become more showy. But हाँ, ऊपर से you have to leave about 1 inch. ठीक है. So that you know, जब आप water करेंगे and all that, तो plants थोड़ा time लेते हैं grow करने में भी. So they should not overfall also. So you can leave about 1 inch depth.
and then plant them. धीरे-धीरे वो grow कर जाते हैं. Yeah. But most important thing about Zen gardening is it has to be kept neat, away from insects, and of course, according to them, lesser is more. So if you put less items, they say it is more effective. So I'm extremely thankful to all my mentors and my teachers who have taught me so many different techniques, not only Zen gardening, but other techniques also. During this simple COVID condition, I have been kept busy with all these kind of artworks. Amazing, Renu ji. Amazing. Amazing. वाकई में. Awesome. Thank you so much. In case there are any questions. वो थर्ड हैंड भी तो दिखाइए ना, who is helping you? अच्छा. My gardener. Okay. Yeah. Yes. My Mali. That's good. Mali is there who always helps me because I can't do too much of sand work because of my problem. So he's there to help me out. He is also a garden lover like me. That is why both of us go hand in hand. And of course, my entire house is very cooperative. My daughter who's doing the camera work today. My husband also motivates me. So that motivation is very important for you all to get busy in these kind of activities. बिल्कुल. बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. Thank you so much. बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होता. बहुत बढ़िया. Thank you to all the unseen hands. Now we are open to question and answers. If someone has any question, please. Very nice. Absolutely very good. और ये रेणु जी की पेंटिंग्स भी पीछे लगी हुई हैं. पेंटिंग्स भी बहुत हैं. इन पर ये एक बारी कैमरा घुमाइए. Mandala painting has been taught to me by Rekha and of course Prema, the basic motivator. So I have learned a lot of meditation during this time. My mandala paintings, which I have done again. हाँ जी, हर क्लास मंडाला पेंटिंग का भी आपने बहुत बढ़िया है आपकी मंडाला पेंटिंग. लवली, लवली. तो गुड़गांव आना पड़ेगा आपसे सीखने के लिए. गुड़गांव आना पड़ेगा. बिल्कुल. Very nice, Amma. Okay, any questions? It was superb. They're very nice, really. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Real creativity. I mean, what an art. रेणु जी, हाँ मेरे पास बुद्धा का कोई स्टैचू नहीं था, तो मैंने लॉर्ड कृष्णा का रख दिया. चल जाएगा? हाँ वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो बुद्धा गिव्स यू दैट वे बुद्धा इज सिटिंग इन दैट पोज. क्या आप देखिए हम लोग भी जब योगा करते हैं तो वी आर मोस्टली सिटिंग इन posture which is triangular. तो हमारा जो योगा का posture है वो भी triangular है. तो बुद्धा जिस तरह से बैठे हैं वो भी एक triangular posture है. तो वो थोड़ा meditative ज्यादा हो जाता है. वैसे तो कोई भी कोई स्टैचू नहीं है, तो मैंने अगर वो meditative pose में होते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट बनाते हैं उसमें कि the energy flows in a better way when you're sitting in a transposition where you have conical shape. Otherwise, so God, you put any God, there's hardly any. मैं तो वहाँ पे कृष्णा रख दिए, जो मुझे ट्रॉफी मिली थी वो मैंने वहाँ रख दिया. मैंने तो वो आपका डेकोरेटिव हो गया. हाँ, I sat in a decorative group also. हाँ, but what I like is that these are very close to our Indian Hindu style of praying also. क्योंकि हम लोग भी as Hindus काफी ज्यादा meditative चीजें यूज करते हैं. But ये कि इसका arrangement थोड़ा different है, लोगों का थोड़ा concept different है, but it's very close to us. So Japanese thinking and our thinking is quite close. Yes. I will bring one Buddha statue for this. बिल्कुल. एक खरीद के लाऊंगी ढूंढ के. Mr. जुबेदर जी, yes मैं कहने वाली थी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई कैन सी योर हैंड रेजिंग. Thank you very much, Renu ji and Amita ji, for your talents. We enjoyed. I am from Bangalore. Thank you. Thank you, Thank you very much. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, I think Renu ji, you explained it so well that people don't have anything left to, actually Renu ji ask. teacher रही है, head of the department रही है.
रेणु जी आप एक बार डिस्प्ले वापस दिखा दीजिए तीनों को जो आपने बनाया। पावर बहुत अच्छी है। तीनों Okay, दिखाया ना। Kashi ji has something to say. Kashi ji, yes, please. Yeah. Yes. Thanks for noticing me. I'm Kashi Vishwanathan from Chennai chapter. Presently, I am living in Bangalore. And Renu ji, your explanation, narration was very good, giving the finer details of the Zen gardening. And Thank also, you. Thank you thanks so much. to your daughter, you said she was handling the camera very well. She was saying that what you were doing. So that made it very interesting. And your whole family is supporting you means a lot. That's very important. I am thankful for your narration and the presentation. I benefited very much by this. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Kashi ji, for your motivating words. Renu जी, ji, एक बारी- one एक बारी तीनों question दिखा in दीजिए the. ना, तीनों Just दिखा a दीजिए second, ना एक बारी। Madhu ji, just a second. We have a couple of questions in the chat box. Somebody has asked, Yamuna ji has asked from Chennai, does humidity levels like in Chennai affect the plants? So if you have any answer to that, maybe. The humidity levels, can you repeat Humidity the question? level, yeah. She's asking if the humidity levels in Chennai will affect the plants. Do you think that? No, so you have to pick up the plants of that area which need less water. The only Less concept water. to water them so much. So try to pick up the plants which can survive with very little amount of water and very little amount of soil. Okay, absolutely. And there is another one, I think, which you had already answered. Anjuji is asking any particular direction the Buddha should be facing. So I don't think so that. I am not aware of it. I'm sorry. If there's any specific about the placement, I'm not aware of that concept. Maybe it's there. I think I should find out the answer for that because that question. Because that's a very repetitive question. Yeah, I know. I should myself search for the answer now. Absolutely, absolutely. I didn't come across this when I read about it and I was doing this. I was not told anything about it. So I'll go into the details and find out the answer. Thank you, Renuji. Thank you. And thank you for asking this question and encouraging me to know more and more about it. Thank you, Renuji. And रेणु जी मैंने आपके साथ साथ बनाती गई जैसा आपने गाइड किया मैं बनाती Very गई good. आपके साथ। Very good. और मैं ये picture जरूर भेजिएगा ग्रुप में। Very nice. Absolutely amazing. Renu, I want to tell you, Rekha Singh is, you know Rekha Singh? Yeah. My first coordinator and my teacher, Rekha Singh from Bombay. She's given lots of comments for you. And thank you, Rekha, for joining us. And it's really very Thank you so much. I have to thank you for motivating me for making mandala. It was Prema's encouragement and Rekha's guidance, because of which I have done so many mandala paintings. So I'm extremely thankful to one teacher who has attended my class, and that is Rekha. So I'm extremely thankful to you, Rekha, for motivating me in this direction of making the mandalas, which is again a very meditative technique. Thank you so much, Rekha. Thank you. I learned Zen gardening and I'm going to do this, and you are my teacher for this. Let us learn from each other. That's how the world goes on. And thank you so much for calling me Prema ji. Thank you very much, Rekha. It's my pleasure actually to calling you in all the sessions. Thank you. I really so much. feel It's my very pleasure. good. Thank you. Okay. Thank you. Okay, Ritu, I think yes. yeah. So जैसा हमने सब Madhu wanted to see the trays, I think, once again. I wanted all of you to see it once again. Renu ji, yes. everybody should see it once again, not only me. बहुत सुंदर है तीनों. ये ऐसे करके घुमा दो इसको जस्ट करके. Take this. Beautiful. Wow. Wow. I like the oval shape the best, यार. I don't know, somehow बहुत appeal कर गया मुझे. Oval shape का जो बनाया ना आपने. ये भी तो तुम बनाओगी पक्का से. I know. पक्का बनाना होगा अब तो. Very nice. Beautiful. We have to have a lamp there.
दिया or something. बहुत I अच्छा would है। like to thank all of you. I'd like to thank all of you for your encouragement, and especially Prema and all my coordinators and Archana ji and all who gave us this platform of showing our talent. And of course, let's see more and more people joining in this. Thank you so much, all of you. Should Have a there nice always day. be Thank you. Thank you so much. Ritu, can Yes, you? like I feel that all of us are gifted with innate and rare talent, and today both Amita ji and Renu ji, they have shown us if we hone those talent and we keep on growing with that talent, we are bound to touch the hearts of many more. And now I conclude the session by thanking both of you, Amita ji and Renu ji, for demonstrating such wonderful talent. And I think बहुत से लोग आज यहाँ से कुछ सीख करके जा रहे हैं और हम सब कुछ ना कुछ ट्राई जरूर करेंगे, किसी के दीवार पे या किसी के कॉर्नर पे ये zen गार्डनिंग या ओशिबाना आर्ट जरूर दिखेगा कुछ दिनों बाद. एंड आप दोनों ने हम लोगों को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस दिया है और हम सबको इंस्पायर भी किया है. एंड ऑन बिहाफ ऑफ all the coordinators from Delhi NCR chapter, yes, I thank especially Ms. Shilu Srinivasan for her untiring support and faith in us, and a big thanks to the HO team and NCR Delhi NCR team for providing us with all the opportunities and support, and most importantly to all of you for being such an amazing and patient audience. And with this I take your leave. Good night, stay healthy, stay happy. Thank you so much. Good night. I want to say something, Ritu. Thank you. Absolutely. Thank you. Please, please I say want one.